बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मेरे नॉर्थ ईस्ट से बहुत दोस्त हैं यार, और एक चीज़ मैं सबको शेयर करना चाहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं नॉर्थ ईस्ट से सारे बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे लगता था पंजाब में सारा टैलेंट है, लेकिन आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में जो हम बेहतरीन टैलेंट है उस वो बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली आई हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम देम अबाउट द प्लेस। आई हैव नॉट गॉट अ चांस इन माई लाइफ टू बी देयर, बट आई श्योरली वुड लव टू बी देयर एंड विजिट द नॉर्थ ईस्ट। एंड इवन आफ्टर टुडे हेयरिंग अबाउट सच ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट द प्लेस, और ज़्यादा मन कर रहा है। तो मैंने एक शो किया था जो मेरे को इंडिया की टफेस्ट टेरेन पे एक ट्रक चलाना था। सो आई होप कि मैं हिंदुस्तान की सबसे सुंदर टेरेन पे कोई 4 व्हीलर चला सकूँ जल्दी। जैसे कि सब जानते हैं कि नेपाल बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और मलेशिया भी जब से टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें फिल्मों के लिए भी जाना चाहिए। करेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक सबसे बड़ी पर्क होती है कोई भी मीडिया को लेके, फिल्म्स को लेके, टेलीविजन को लेके, एड्स को लेके, कि हमारे को ट्रैवल मिलता है। दैट्स लाइक अ पर्क ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। एंड व्हेन यू गेट टू सी न्यू प्लेसेस इट्स ऑलवेज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज पर्सनली मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मोर देन सीइंग द प्लेस, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ के लोकल लोगों के साथ बातें करने में। कई बार होता है, मैं कई कंट्रीज़ में ऐसे गया हूँ जहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोलते वो लोग, लेकिन उनकी लैंग्वेज में वो कुछ और बोलते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बात करता हूँ, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कई बार मज़ा आता है। सो मोर देन traveling, I find the culture exchange of two people, of two countries, of two states, I think it's very interesting. तो मेरे को मौका मिले मैं जल्दी जाऊँ और हॉलीडे करूँ। आज अपने घर वालों के साथ आया हूँ तो परमिशन भी मिल जाएगी अगर अकेले ट्रिप भी मारना हुआ तो। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में अगर टूरिज्म हो गया सिनेमैटिक के लिए? आई थिंक बहुत ज़रूरत थी इस स्टेप की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत लंबे टाइम से नेग्लेक्टेड रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिवली नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश के साथ इंटीग्रेट करने में, इक्वल पार्टनर बनाने में जुटी है। और मेरा ख़ास लगाव है नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो खुद मणिपुर से है। एंड इस कॉन्फ्रेंस का एक असर ये हुआ है कि सिक्किम के ऊपर यहाँ जो ऑडियो विजुअल था कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, हमने इतना तो डिसाइड किया है कि अगली वेकेशन बच्चों के साथ सिक्किम में होगी। इससे कितना फ़ायदा होगा बॉलीवुड या तो सिनेमा को देखा जाए तो? फिर देखिए, सिनेमा को कितना फ़ायदा होगा, ये शायद सिनेमा के फ़ायदे के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं है फ्रैंकली। ये ज़्यादा फोकस है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो रीजन है उनको एक्सप्लोर करना, वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के लोगों को फिल्म और शूटिंग से एम्प्लॉयमेंट जो मिले, कल्चरल एक्सचेंज हो, वो बेनिफिट, टूरिज़्म का बेनिफिट हो, और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जो आसियान की मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा यूनाइटेड हों एक दूसरे के साथ। क्योंकि जियोपॉलिटिकल रियलिटी अभी की ये है कि हम सबको एक साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है, साउथ चाइना सी और उन सब के मद्देनज़र। ये फिल्म इंडस्ट्री को समझना होगा कि हमें नॉर्थ ईस्ट क्यों जाना है। हम खूबसूरती के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, जबकि इतनी ढेरों खूबसूरती भरी हुई है देश के अंदर में। और नॉर्थ ईस्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये हमें मुहैया कराएं। एक एक्सचेंज शुरू होगा तो लोग समझेंगे कि ये भी हमारे ही देश का हिस्सा है। सर लिपस्टिक अंडर बूट का ट्रेलर रिलीज हो गया है सर, लेकिन काफ़ी एक हाँ हाँ जी। और हाँ, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक और बात कि फिल्म इंडस्ट्री को क्यों जाना चाहिए वहाँ पर। अगर एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन नहीं होते, जो कि त्रिपुरा से हैं, वहाँ की रॉयल फैमिली से हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो हमारी इंडस्ट्री अधूरी होती। डैनी डेंजोंगपा नहीं होते तो हमारी इंडस्ट्री अधूरी होती। तो आई थिंक इट्स पे बैक टाइम। अब हमारा टाइम है कि हम ये ऋण वापस चुकाएँ, नॉर्थ ईस्ट जाएँ। सर लिपस्टिक अंडर बूट का ट्रेलर लॉन्च हो गया जी। काफ़ी आलोचनाएं जो हो रही है इसकी, और कंट्रोवर्शियल मूवी बताई जा रही है, क्या है इसके? ये मूवी कंट्रोवर्सी के लिए तो बनाई नहीं गई थी भाई। इस डायरेक्टर की एक फिल्म की खासियत एक ये है कि इसमें तकरीबन पूरा क्रू 80% लड़कियां ही हैं। डायरेक्टर से लेकर के डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट, म्यूज़िक, सब लड़कियां हैं। तो लड़कियों ने मिल करके, महिलाओं ने मिल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे देश में समाज के एक ख़ास वर्ग में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, एक फ़िल्म बनाई है महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी मर्द ने आकर के जो है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए फ़िल्म नहीं बनाई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सिर्फ सेक्स दिखाने के लिए, टिटिलेट करने के लिए लड़कियों की क्लीवेज दिखाई जाती है, कमर के शॉट दिखाए जाते हैं, बैक शॉट्स दिखाए जाते हैं, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जब लड़कियां अपने मन की बात खुलकर कहना चाहती हैं सिनेमा के ज़रिए, तो कंट्रोवर्सी हो गई।
अजब देश की गजब कहानी है। सर सेंसर बोर्ड से कुछ सीन्स कट हुए हैं आई हैव नो आइडिया, आई थिंक बहुत छोटे मोटे कट हुए हैं, ऐसे कुछ खास कट नहीं हुए। सर जीएसटी कर आ रहा है तो इसका क्या टेक है आपका? अब तो आ ही रहा है, अब जैसे वो कहावत है कि शेर आया शेर आया, शेर आ गया तो क्या करोगे, जो करेगा शेर करेगा। तो जीएसटी आ गया है, अब जो करेगा जीएसटी करेगा, हम क्या करेंगे, हम आप भर। इसके सपोर्ट में है कि मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ जी जीएसटी के, बहुत अच्छी पहल है। कल मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बैठ करके समझाया कि किस तरह से बहुत से लोग जो टैक्स नहीं देते थे, जिनको टैक्स देना चाहिए था, वो भी अब कटघरे में आ जाएंगे जी, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और हम जैसे जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, हमारा बर्डन कम होगा, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा देश का। सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। खामखा हवा ना बनाए लोग इसको, जो डर, सिर्फ वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जो टैक्स देना नहीं चाहते। Guests, dignitaries, panel, I think everybody has spoken about the problems in Northeast. I would not like to focus on that because yes, we know infrastructure is not there because nobody ever went to shoot them. Simple. And today it is a very revolutionary step. I'll not be focusing so much on the ASEAN aspect, more on Northeast because that's much closer to my heart. My wife is from Manipur. Two things why we should go to Northeast. Because we can go anywhere. Our country has two religions, movies and cricket. Simple. These two things unite us, the whole nation. Northeast, unfortunately, the whole country, not just the government, we have neglected Northeast for too long a time. I'm thankful to the present government that proactively you're trying to unite Northeast with rest of India, to make them feel that yes, you are part of India. For that sheer reason, filmmakers, I think it's our national duty to go and shoot in Northeast, to make them feel that yes, you're not neglected anymore, you're part of us. Efforts will be needed. Problem is multifarious, I think, because there's no awareness, as Sanjay Chahal said. We don't know the culture, we don't know what is the local cuisine, costumes. Ignorance on our part, it is not the duty of the Northeast to tell us about them. It is our duty to find out more. We need to be educated. Documentaries, commissioning mini-series, even going a step further, if we can have a think tank of luminaries from the industry, directors, writers, and not just Hindi. I think you should approach South as well, Tamil and Telugu industries, because all said and done, they are more adventurous as compared to us. I'll be very honest. You must have a think tank. If need be, commission a movie, because waiting for the right script which will integrate northeastern locations into something or a story, it's not going to happen very soon. People will take time, policies will have to be framed, it will get trickle effect, slowly and slowly. If you want to give it a jump start, I would suggest commission either a mini-series or a movie. Think of a story specifically. We have writers. And as Sanjay rightly pointed out, that cultural exchange is very, very necessary. Very necessary. Rest of the country needs to know what we are missing out on. Very recently, there was a very bad incident in Delhi, the Delhi Golf Club, where a woman from Meghalaya was asked to leave because she was wearing a traditional dress. And the manager thought that she's dressed as a maid. That is the level of ignorance of rest of the India. We need to correct that. That will happen. Let's not focus on the negative things. Apart from that, I think we need to, as industry, as writers, producers, directors, we need to analyze where we have been wrong. Because my wife is a trained actress, and I am an actor, I'm not a producer or a director. I can only talk from the point of view of a creative person as far as acting is concerned. A person with oriental features in Hindi mainstream industry is either being stereotyped as a watchman, or a person working in a restaurant, a waiter, or somebody working in the flesh market.
these three stereotypes. Thankfully, Yashraj broke that stereotype with Chuck De when a Northeastern was portrayed as a regular, normal person. Just to lighten the atmosphere, by the way, the character's name was Molly. That's based on my wife's name because Jaideep is a good friend. Yeah. So I think indirectly we have contributed something. So we need to broaden our horizon also. It took us a long time to integrate Sikhs into mainstream cinema as normal people. They were just, comic stereotypes. So we also need to think that how we break these stereotypes. There will be baby steps, yes, definitely. But that is the effort which will be needed on our part. As government and ministry, I think you need to work on the think tank. That's it. Thank you. जब लेट आते हो तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है. आप जो कुछ बोलने वाले तो आगे वाले सब बोल चुके होते हैं. So coming straight to the point is that everybody said about the infrastructure. I read it's very well presented that you need infrastructure, what you're going to do about the infrastructure, and already a couple of people said, very well said, that the rest of the India or the world does not know your stories, culture. And today, I will say certain things is very practical because everybody is so hopeful here, and we're just painting a the bright picture. But you look at very practical aspect of it. It has become very competitive. The business has to be very cost effective. So if you're looking at a business in Northeast, promoting tourism is little separate for me than culture and other things. So the right people, authorities will have to separate those two things. And if you're looking at business, I would just first say a couple of things on business which are a little alarming. If I want to create some very nice, scenic looking locales, today it happens on computer graphics, I don't need to go anywhere. I'm not trying to dishearten you. We all, if you're looking at a business in today's time, we'll have to all go above what we are thinking among the boundaries, what have we seen, that Kashmir mein shooting hota tha or Manali was shot, blah, blah, blah. Today, times have changed completely. So now, what you need to do, especially I'll just talk a little about television because I head the Television Producers Association, and what I would recommend is create stories and shows which are completely based in Northeast, and a producer or a channel can get on, collaboration with you all, with especially the Northeast state, and then that show which is made entirely in Northeast will take Northeast story, characters, and then you don't have to worry about father kaisa lagta hai, mother looks what, everybody is from Northeast. And it will be promoted, the entire Northeast will be promoted, and when you do a serial, a show, where you need to shoot for a year or a little more than that, you don't have to worry about the computer graphics to competition to anything. The whole show is shot in Northeast, actors from Northeast, everything except some technicians which you will require from outside, they will come, and that's how I believe the entire Northeast will get an opportunity to get exposure to the world. So I said this about TV, and I feel really we need to look at a lot of things, and by saying this, my basic main purpose to be here, when I was speaking with Parul was following with me, I said, and I'll really try, I've just shot one pilot in one hill station, I'm not naming it. I've just shot one pilot in one hill station, so I know what problems and everything I've gone through, I'll share that with you. I am already looking at shifting that show to Northeast, and I will definitely, I do not know whether we should be applauding that right now or not, thank you very much, but I'm looking at it. Now there are many aspects, and I'm looking at it, why? For one simple reason, I never knew that, okay, Northeast is offering so much. I have been to Northeast, I love that place, I never thought of shooting there. And suddenly, after I shot the pilot, I got to know about it. I said, this is a good opportunity. I will definitely speak to you, and I'll definitely try to see that whether conceptually my show fits in there or not. Thank you very much. Thank you, Mr. Manjeetia. Now, Lady Somani Paul. But I need a little shift from Northeast region
are truly delighted to start with this today itself. We look forward to welcoming you and giving you all the best facilities in the Northeast region. Thank you very much, Mr. J.T. Majetia, television actor and director. We look forward, sir. Thank you so much. Just talking a word about Miss Kalpana. Well, what do I talk about? Having directed more than 140 documentaries, one great feature film, along with a main serial. Sorry, it's not one, it's 2 feature films. And all she has to say is that they've all been released and appreciated by people. सर क्या कहना चाहेंगे सिनेमैटिक फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया? ये बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा बड़ा अच्छा कॉन्फ्रेंस है। क्या होता है कि देखिए ऐसी ही जगहों से एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट जाते हो और वहाँ पे आपके स्टेट के बारे में इन्फॉर्म करते हो, तो आज काफ़ी बॉलीवुड से यानी फिल्म इंडस्ट्री से टेलीविज़न के बहुत प्रोड्यूसर्स हैं, काफ़ी मेकर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों में ये अवेयरनेस फैलेगी। काफ़ी इन्होंने पब्लिसाइज भी अच्छा किया है, यहाँ कुछ इंटरव्यूज़ होंगे, आज बातें फैलेगी। ये नॉर्थ ईस्ट जो 5-6 स्टेट को मिला के बहुत सीनिक जगह बनती है, उस शूट के लिए प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करना चाहता है, सब्सिडीज़ देना चाहता है। जब ऐसी ऑफर्स आती हैं तो कोई भी मेकर जो हमेशा ये सोचता है कि यार मैं बाहर जाऊँगा, मुझे करना तो है शूट, पर खर्चा बहुत हो जाएगा, तो उसके लिए पहला ही एक बड़ा जो विघ्न होता है, सोचने में ये विघ्न होता है क्रिएटिव के दिमाग में, वो निकल जाता है। अ क्रिएटिव पर्सन कैन थिंक फ्रीली दैट ओके इफ़ ही विशेस टू शूट इन नॉर्थ ईस्ट, at least the cost pressure which he was thinking is taken off. Now about the creative process, मुझे now about the infrastructural process, तो मुझे लग रहा है जब कि गवर्नमेंट यहाँ सामने से आई है और इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सारी परमिशन होती है जो वहाँ जाने की बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हम कहीं और जाते तो वो पहले तो पता नहीं चलता कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, तो मुझे लग रहा है 1 विंडो क्लियरेंस जैसी परमिशन मिल जाएगी और बहुत ऊपर से सपोर्ट मिलेगा। तो कोई भी क्रिएटिव पर्सन अगर आज ऐसा सोचता है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाके शूट करना है, तो उसके लिए बहुत आसान हो गया। बस इस बात को आप लोगों को थोड़ा बढ़ावा देना है और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसको प्रमोट कर सके करना चाहिए। बिकॉज मैं आई हैव बीन टू नॉर्थ ईस्ट, बहुत खूबसूरत जगह है, यानी ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को देखनी चाहिए कि इंडिया में मैं लगातार 10 साल से अब्रॉड हॉलीडेज़ के लिए जाता था। बीच में 1 साल ब्रेक लेके नॉर्थ ईस्ट गए थे हम लोग, और मुझे याद है मेरे बच्चे वहाँ ज़्यादा खुश हुए थे, हम वहाँ ज़्यादा खुश हुए थे, और हमको लगा था यार हम क्या बाहर चले जाते, विदेश चले जाते हॉलीडेज़ के लिए, इंडिया तो देखते ही नहीं, इंडिया इतना खूबसूरत है और नॉर्थ ईस्ट इज़ ब्यूटीफुल, सुपर। तो मैं चाहूँगा कि बहुत लोग इसको सपोर्ट करें, बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाएं और नॉर्थ ईस्ट को इतना लोगों तक लेकर आए ताकि हमको पता चले कि हमारे इंडिया में क्या क्या खूबसूरत जगह है। थैंक यू। माय प्लेजर।